औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैंने जो टॉपिक लाया है वो सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 7th के लिए। हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, आज हम जो ये टॉपिक काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमारा जो लर्निंग आउटकम होगा, इसमें पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं। पढ़ने के बाद जो लर्नर होगा वो एबल होगा तो यूज़ अप्रोप्रिएट टेंस यूज़ कर सकता है सेंटेंस बनाने में, जुमला बनाने में। द लर्नर, और दूसरा जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो ये है कि लर्नर विल बी एबल टू एंगेज विद in conversation in family, friends, teachers using appropriate vocabulary। और दूसरा जो मकसद है इसका, जो लर्नर होगा वो एंगेज रहेगा कन्वर्सेशन के दौरान अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ विद वोकैबुलरी। तो बच्चों, पहले हम वार्म अप एक्टिविटी करते हैं। वार्म अप एक्टिविटी में क्या करते हैं हम बच्चों? वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट in a previous session we have to go to the previous session started with the future tense। तो पिछले सेशन में हमने फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा है एंड ऑल्सो स्टडी टू काइंड्स। उसके हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं। आई होप यू हैव go do that and understood it। So let us warm up a bit। What is future tense? तो बच्चों, हम थोड़ा वार्म अप करते हैं। हम देखते हैं व्हाट फ्यूचर टेंस मीन्स। व्हाट इज फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस इज अ used tense is used to denote an action that will be takes place at some times in future। फ्यूचर टेंस, अगर आपको याद होगा, फ्यूचर टेंस मीन्स वो टेंस जो हम यूज करते हैं, कोई काम दैट विल बी टेक्स प्लेस, जो होने वाले हो। कहाँ पे? समटाइम्स इन फ्यूचर में, जो फ्यूचर में होने वाले हो काम, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। या दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, आई शैल पास दिस ईयर, इस साल में कामयाब हो जाऊंगा। तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कामयाब, यू शैल। तो वी आल्सो डिस्कस इट इन दिस 2 काइंड्स। दैट इज, हमने फ्यूचर टेंस की 2 किस्म डिस्कस किए हैं। एक को हम कहते हैं द फ्यूचर सिंगुलर, इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं उसको। तो पहले हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल इंडिपेंडेंट टेंस क्या होता है। द फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब टेंस used for a future activity or a future state of being। तो जो फ्यूचर टेंस होता है, ये होता है वर्ब टेंस जो हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर एक्टिविटी के लिए। तो इसका जो रूल है, फ्यूचर टेंस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए जो रूल बना हुआ है वो है इट इज़ फॉर्मेट। फ्यूचर टेंस कैसे बन जाता है? इट इज़ फॉर्मेट यूजिंग सब्जेक्ट्स प्लस शैल ओब्लिक विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, कैसे बन जाता है। आई शैल गो टू जम्मू नेक्स्ट वीक। आई मीन सब्जेक्ट, शैल and go will to Jammu, first form of verb, go will go to Jammu next week। तो बच्चों, इस तरह हमने दूसरा टेंस भी पढ़ा है जिसको हम कहते हैं द फ्यूचर कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं। उसका जो रूल है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस डिस्प्यूट्स an action that is likely to happen in the future and continues for an unexpected length of a time। एक बार मैं और दोहरा लेता हूँ। The future continuous tense depicts an action that is likely to happen in the future and continue for an unexpected length of time। Future continuous means जो काम हो रहा हो
इज लाइकली जो होने वाली हो, हैपनर इन द फ्यूचर में होने वाली हो, एंड कंटिन्यू फॉर एन अनएक्सपेक्टेड टाइम, जिसको कभी ख़त्म अनएक्सपेक्टेड, जिसका हमें पता है नहीं ये कब ख़त्म होगी, अनएक्सपेक्टेड टाइम। तो इसके जो रूल बनाए हैं, इट इज़ फार्मर कैसे बन जाता है, इट इज़ फार्मर यूज इट will be, shall be, and plus the first form of verb plus ing। तो इसकी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसा आपकी I shall be solving the sum of them, I shall be solving the sum of them। तो बच्चों अब हम अपने टॉपिक पे वापस आ रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस। नाउ लेट्स लर्न द नेक्स्ट टू काइंड्स। हम इसकी और दो किस्म पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टू काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के जो काइंड्स हैं, हमने पहला पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा है परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों पहले हम जान लेते हैं, एज यू कैन सी from the above that we have to discuss two more kinds of future tense, the future perfect tense, the future perfect tense, the future perfect continuous tense। इनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या हुआ है, the future perfect tense is used to refer to an action or event which will have been completed at some time in future। एक बार फिर मैं पढ़ लेता हूँ, the future perfect tense is used to refer to an action or event which will have been completed at some time in the future। तो बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या हुआ है, ये वो एक टेंस है जो हम यूज़ करते हैं, जो रेफर करते हैं वो काम जो या कोई इवेंट जो होने वाला हो, विच विल हैव बीन कंप्लीट, जो कंप्लीट होने वाला हो एट सम टाइम किसी मुद्दत में, इन ए फ्यूचर में। तो उसके लिए क्या रूल है यहाँ पे, उसके एक रूल है, द टेंस इज परफॉर्म फॉर्मेट, ये जो टेंस है ये कैसे बन जाता है, इस फॉर्मेट यूजिंग विल, इसमें हम विल हैव प्लस शैल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए जो रूल है, द टेंस इज फॉर्मेट यूजिंग विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। तो इसकी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे she will have reached Mumbai by now, she will have reached Mumbai by now, by the time you get the letter I will have left। और दूसरी यहाँ पे by the time you get this letter I will have left, जब आप ये by the time you get, जिस टाइम आप इस लेटर को ले आप तक पहुँचेगी, I will have left, मैं चला गया होगा वहाँ पे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये काम में इस्तेमाल करते हैं टू डिपिस्ट एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर a certain time in a future, but exactly when that happens is not known। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम, हमें फिक्स टाइम नहीं पता है कब ख़त्म होगा। एग्जांपल यहाँ पे बाय 11 AM आई विल हैव completed my homework, by 11 AM आई विल हैव complete my homework। तो बच्चों अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, fill in the blanks with the future perfect tense of the verbs given in the brackets। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हमने पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो है ये वर्ब्स है वो उनसे इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, पहले ये जो है आई डैश माई लेसन, आई डैश माई लेसन, आई डैश माई लेसन। दूसरा है
he dash home by now. तो ब्रैकेट में रीच है. तो तीसरा है we dash our work when ball rings. Finish है the patient dash before the doctor comes. Menu the dash place when I arrive. ब्रैकेट में leave है you dash the news by then. और चौथा है the winter dash wall before you leave. तो और एक है in 2021 he dashed the London for 20 years. By the end of the course she used speak French. I expect. तो बच्चों जो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पे तो जो दिए गए हैं तो कुछ पहले बच्चों जो shall तो बच्चों यहाँ पे हमें जो ये इसके जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं. I shall received my lesson. He will reach it home by now. जो इनके आंसर है वो आखिर पर दिखाए गए हैं तो इसकी आप खुद प्रैक्टिस कर लेना है. उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन that will continue to happen for a period or a point of time in future. Future perfect continuous tense is used to indicate an action that will continue to be happen for a period or for a point time in the future. इसकी जो रूल बनाए रूल it is format using will have been shall have been plus present participle that is first form of verb ing. तो बच्चों जब हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं I shall have been solving the sum since 2 hours. She will have been learning music for 2 years. The future continuous tense is used. ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? The future continuous tense is used to designate the duration of an action that continues up to another point in the future. For example, by the time you arrive, I will have been exercising for an hour. To donate an action that finishes just before another time or action in the future. जो एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं when I meet you I will have been dancing so I will be tired. तो यहाँ पे हम जो प्रैक्टिस यहाँ पे दिखाई गई है fill in the blanks with a future perfect continuous tense. I will work since 2 p.m. He shall swimming for 2 years. They shall read poem for an hour. When I turn 20, I will play piano for 10 years. तो बच्चों ये हुआ on Monday I know for a week. In November at my company for 3 years. In November I will work at my company 3 years. Rahul will write various kinds of articles in this topic. Seema will
around a word before to come India. Travel, Sima traveled. They practicing. They shall practice here hockey in the field before you reach. I will, I dash, I will help him to die task before the class. तो बच्चों ये जो shall have received, will have reached, shall be finished, will have died, ये जो है जो की आंसर जो हमने लिखे हैं shall have been working, we have left, we have heard it, we have panted, will have lived, will have taught, will have grown, shall have been working, we have been swimming, will have been reading, shall have been playing, will have been knowing, तो will have been working। तो हम और एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। राहुल, सीमा, will have been। तो बच्चों ये जो इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे दिखाई गई है will have painted, will have lived, will have taught, will have been grown, shall have been working, will have been swimming, playing, will have been writing, will have been traveling, will have been practicing and will have been helping। तो बच्चों हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में will प्लस have been यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।